क्लाइंट को बोलते हैं कि आप कुछ चैलेंजिंग काम दो, और अगर चैलेंज नहीं होता है तो मैं टीम को बोलता हूँ कि इसमें चैलेंज क्रिएट करो. Dharamji, take us back to those days when you actually decided to become an architect. I wanted to be an electrical engineer, but हम इंदौरी लोग हैं, पोहा जलेबी खाना बहुत पसंद करते हैं, तो डिज़ाइन को भी हम एक तरीके से फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं. आपका डेली रूटीन क्या है कि आप यू ट्राई टू फाइंड सम सॉल्यूशंस पोहा जलेबी फॉर यू. हियर इट इज नॉट लाइक एवरी डे इज द सेम मेन्यू. एवरी प्रोजेक्ट इज डिफरेंट. All the challenges are different. मतलब being an architect, being an interior designer, at the same point of time you started designing a product. Everything is part of design, I would say. Designer कुछ भी कर सकता है, आप कोई भी challenge दो. Namaste and welcome to Raise Your Toast with Davina. I'm your host and दोस्त कोपिल महेश्वरी. आज हमारे साथ में एक ऐसा आर्किटेक्ट आ रहा है जो सिर्फ डिजाइन नहीं बनाता, वो एक कहानी रचता है. He is the founder of Art and Architectural Association, whose design speaks louder than words. 20 plus years का experience, national and international awards, solo trip for more than 100 countries, photography and product design का passion, इनको बनाता है एक solo, one and only innovator in his own industry. Ladies and gentlemen, please raise your toast with none other than architect Dharam Patel, and let's inspire with his words today. Thank you so much for coming to Raise Your Toast with Davina, and I'm really glad and I am feeling blessed today that you have come and you've agreed to come on our podcast. It's my pleasure. Thank you so much, sir. Dharamji, take us back to those days when you actually decided to become an architect. How did you actually plan, or how did you manage to come in this industry? Why did you choose as an architect to become an architect? Yeah, so during those days, we have a very limited kind of exposure at that time, and every time we always wanted to be an engineer. So I wanted to be an electrical engineer by my at that time of wish. But when I was in 12th standard, and I had a friend in my class who wanted to become an architect, and then I came to know that there is something called architecture. Okay. तो वो बंदी के लिए जब मैंने कोई क्लासेस उससे बताया कि शी वाज नॉट फ्रॉम बड़ौदा, सो शी वांटेड मी टू सर्च सम काइंड ऑफ क्लासेस वेयर यू फॉर द एंट्रेंस एग्जाम. और उसके लिए जब मैं क्लास ढूंढने गया तो तब मुझे पता चला कि यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. अच्छा. So by chance you actually went into architecture, and today you're doing fantastic. Yeah, that is destiny, I would say. That is destiny. भगवान ने आपको आर्किटेक्चरल के लिए ही बनाया था. हाँ, ऐसा है. Very nice, very nice. धर्म सर, in the grand fest of design, what would you call the main course? हम इंदौरी लोग हैं, पोहा जलेबी खाना बहुत पसंद करते हैं, तो डिज़ाइन को भी हम एक तरीके से फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं. तो that essentials that fill up, and what's that dessert that touches, that leaves you craving more for design? सो एक्चुअली जैसे आपने बताया कि भाई आपका डेली रूटीन क्या है कि आप यू ट्राई टू फाइंड सम सॉल्यूशंस. दैट इज योर एवरीडे रूटीन, लाइक पोहा जलेबी फॉर यू. द ओनली थिंग कम्स दैट इट कम्स इन अ वे कि भाई आप जब इसका कोई रिजल्ट आपके आता है एंड द क्लाइंट इज वेरी सेटिस्फाइड विद द आउटकम, बिकॉज हियर इट इज नॉट लाइक एवरी डे इज द सेम मेन्यू. एवरी प्रोजेक्ट इज डिफरेंट. ऑल द चैलेंजेस आर डिफरेंट एंड ऑल द आउटकम्स आर डिफरेंट. Okay. But the process remains still the same. Right? But then you strive for the good outcome, and try to find solutions where the projects are successful. So that's our goal. Successful in a way कि हम किसी का घर बनाते हैं तो he should be very satisfied with whatever he has got. Right. हमारे से उनको जो मिला. Right. अगर कोई प्रोजेक्ट कमर्शियली बनाता है तो how better he can come out with that. So whatever the idea or the goal of the client behind creating some project, that is very important to keep in mind and strive for it. तो हर एक प्रोजेक्ट में अलग अलग चीज़ होती है. कोई ROI बेस्ड काम कर रहा है तो उसके लिए कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. सो वी हैव टू फाइंड द राइट सोल्यूशन विद इन हिज कॉस्ट. राइट. नहीं तो वो प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा. एब्सोल्युटली. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स which there are so many algorithms which you have to work within your mind. There is no computer to do it. Absolutely. But with your experiences, with the kind of exposure you have,
you will have to find those from your within itself, and that craves you for more design exactly. elements, और more हर बार design. कोई नया चैलेंज, कुछ नया challenge. तो अभी ऐसा होता है कि इससे आगे का चैलेंज क्या है, मींस यू गिव अस सम चैलेंज, हम क्लाइंट को बोलते हैं कि आप कुछ चैलेंजिंग काम दो, चैलेंजिंग काम हो. और अगर चैलेंज नहीं होता है तो मैं टीम को बोलता हूँ कि इसमें चैलेंज क्रिएट करो. अच्छा. बराबर है कि हम घर बना रहे तो सब घर बनाते हैं, तो हम अलग कैसे बनाएंगे, तो हमने मिट्टी से बनाना चालू किया. अच्छा. हमने सब सस्टेनेबिलिटीज यूज़ किया. वी एक्सपेरिमेंट लॉट ऑफ न्यू मटेरियल्स. राइट. सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स वी ट्राई टू पुट अप चैलेंज. क्योंकि क्लाइंट को आइडिया नहीं है कि भाई ये ऐसे भी बन सकता है, ऐसे उसको तो है कि मेरे को एक मस्त बंगले बनाना है या जो भी बनाए, जो कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है. अभी एक स्कूल बना रहे हैं, तो वी आर गोइंग इन अ वेरी इनोवेटिव वे. ओके. या वी आर कम्प्लीटली डूइंग अ बायोफिलिक स्कूल. आपको एलिवेशन में सिर्फ ग्रीन ही दिखेगा, ग्रीनरी दिखेगी. हाँ बस, देयर इज नो अदर एलिवेशन. लवली. कहाँ है सर? तो ये अभी बड़ोड़ा में आ रहा है. अरे वाह, क्या बात स्कूल है. या सो दैट काइंड ऑफ स्टफ. सो वी ट्राई टू चैलेंज द लोकल कोर्सेज ऑफ आर्किटेक्चर. तो ऐसा होता है. सर, व्हाट स्पार्क्ड योर जर्नी इनटू प्रोडक्ट डिजाइन? एक छोटी सी पोकर टेबल से लेकर आपने एक विंग्स वाली फ्रैंकी की वैन भी बना दी. मतलब बीइंग एन आर्किटेक्ट, बीइंग एन इंटीरियर डिजाइनर, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू स्टार्टेड डिजाइनिंग अ प्रोडक्ट. Actually, everything is part of design, I would say. I would not like to limit myself as a designer कि भाई हम यही कर सकते हैं. हाँ. डिज़ाइनर कुछ भी कर सकता है, आप कोई भी चैलेंज दो. हाँ. कल फैशन डिज़ाइनिंग होगा तो उसमें भी हम ट्राई कर सकते हैं. So basically you should have a creative bent. हाँ, और उसका प्रोसेस होता है. I cannot say कि we can be successful in anything from the first day. तो प्रोडक्ट में भी हमने आगे 2-3 बार एक्सपेरिमेंट किया. Now we got a groove on it कि ये प्रोसेस होता है. हाँ. तो earlier whatever we did were experimental stages. वो शायद आगे नहीं बढ़ा. But now the things what you see have been matured to that level कि वो अभी आगे पेस ले रहे हैं. So पोकर टेबल डिजाइन करते समय जब ये चीज़ आपके सामने आई कि आपको ये करना है, डेफिनेटली इट वुड बी अ चैलेंज फॉर यू, बिकॉज आपने कभी प्रोडक्ट डिजाइनिंग इस लेवल की नहीं सोची होगी. बिल्कुल बिल्कुल. तो what came in your mind when you wanted to start that? Have you ever played poker before that? Actually, I have never played poker. You never played poker? But तब जब प्रोजेक्ट आया तो खेलना चालू किया. अच्छा. बराबर है. Okay. And the client itself, who is based in USA, he himself is a poker fanatic. अच्छा. यानी वो 24 घंटे खेलता है, खेल सकता है. हाँ. वो बड़ी बड़ी टूर्नामेंट्स में जाते हैं, वो वेगस जाते हैं. Okay. वो टूर्नामेंट्स पोकर का खेलते हैं. So I was with them for a long time. Oh, you spend time with them? Yeah, because the Alpha Healing Center जो प्रोजेक्ट है वो भी वही क्लाइंट्स है. अच्छा. So we are with them, we are doing 15-16 projects with them up till now. So I know okay what is within that poker, and they wanted to start a new venture whereby they wanted to sell poker products. हाँ. So they approached to me that Dharam, why can't we try something and let us design some poker, and he gave us some brief. He already did some homework कि भाई इसका market share ये है, इसका ये वो है. So all the mathematics were given to us and the kind of parallel designs which we are going to compete. Okay. तो then we started studying. तो उसको 1-1.5 साल लगा ये प्रोडक्ट को इवॉल्व करने में. अच्छा. एंड अराउंड 20-25 प्रोटोटाइप्स. पहले बना, उसमें ये प्रॉब्लम था, दूसरा बना, फिर इट इज विदाउट क्रीज आल्सो. Exactly. The poker table is without crease. That's the USP of that table. बिल्कुल. There's no poker table in anywhere in this world is designed in such a way कि वो fold भी होता है, और जब unfold होता है तो उस पर crease नहीं होता. Crease नहीं होता है. Fantastic. So did it really help you because you're an architect to do a product designing? Yeah. Actually, see, again I tell you, like as I say always, कि भी design or scale does not matter, or size does not matter. Actually what happens that you should understand the process of design. तो process कोई भी होगा तो आपने एक फॉर्मूला जैसा है, आपने इधर से प्रॉब्लम डाला और इधर से सॉल्यूशन आएगा, बट यू शुड अंडरस्टैंड हाउ टू प्रोसेस दैट. सो इसमें वही रूट्स है, केस स्टडी करो, समझो चीज़ को, पहले समझो, सब्जेक्ट को समझो, समझने के बाद you find innovative ways to find Look a at the product. new thing out of it, and then continuously evolve it. Okay. क्योंकि प्रोडक्ट बनता है तो मार्केट में जाता है, उसके रिव्यूज आते हैं, उसका फीडबैक आता है, उसके बाद उसको फिर वर्जन्स चेंज होते हैं. तो यू सी आईफोन अगर 1 से आज 17 है, कि अगर सैमसंग है तो आज फ्रॉम 0 to 25 है, तो वाई दिस वर्जन्स, एवरीबडी इवॉल्व्स.
Evolve. Nothing is constant. So Yes. product is something which is continuously evolving. Evolving. Very nice. Very nice. You've already won such an impressive list of awards. I mean, when I saw your entire bio, I was amazed seeing your awards, and all international awards, I must say, Exactly. maximum of them. Does that fuel you to keep rising the bar higher? Or do you feel the box of satisfaction is already overflowing and completed? मतलब 2018 से लेकर 2024 तक back to back, I can see you either nominated or you're winning an award. See, actually, that fuels you. Because what does? happens, yeah. So, as a philosophy of our team, we always wanted to compete internationally. तब सी हम यहाँ पे अगर कुछ भी करेंगे तो वो तो एक नज़र है सबकी, वो नज़रिए से काम करते हम ऐसा काम करें कि हम वर्ल्ड में क्यों नहीं जा सके. So earlier attempts we failed a lot of times. You know, we competed from last 2011. I started competing for international awards, and 2016 was the first time we could, you know, go through one. And that was one of the biggest, like, World Architecture Festival, and we were all thrilled. And the idea is that I kept on visiting this kind of award events to know what the fraternity is doing. The fraternity is not within our city, not within our state, not within the country. It is the world. So हमारी fraternity does not limit any boundaries. Right. So where you see these people, you see in this kind of events. These kinds of You may be able to visit a couple of offices outside with some influences or permissions. But you if you want to meet 500 designers or 1,000 designers at one place, you compete. You compete. Then you are eligible to meet them. You are Yes. on level terms. Yes. So बराबर you है. have peer-to-peer learning. Exactly. There you have हाँ. peer-to-peer तो learning. वो लोग जब काम करते हैं हम देखते हैं तो हम वहाँ जाके हमको लगता है कि यार see there is lot of Scope. mile to go, lot of things to do. Yes. हम जो कर रहे हैं वो आज ये है, but I've seen so many people doing brilliant works, different concepts, amazing ideas. कुछ चीज़ें बहुत simple होती है, but वो simplicity में भी वो जो uniqueness या वो कैसे simple चीज़ों को सबसे बेस्ट बनाना है, वो भी एक आर्ट है. आपका फर्स्ट अवार्ड जो होगा वो आपके लिए एक बहुत ब्रेकिंग होगा. हाँ. वो कौन सा अवार्ड था? ओह. एक्चुअली सच में बताओ, द नॉमिनेशन itself for the World Architecture Festival, World Architecture. I could not sleep that day because we were kind of so pushing hard for this, and then we got this announcement, and the Alpha Healing Center, the Rehabilitation Center, was nominated. तो अब जब आपका ओलंपिक्स में पहले 8वें नंबर लग जाता है, वही आप जीत वही हो जाती है. सही बात है. Then probably, you know, we won the Asia Design Awards, then the Live Hospitality Awards, Yes. the BLT Design Awards. Yes. So many after later on. But the first one where we could actually That's be close on the to dais, heart. be on the stage. That's your first love also, Exactly. I believe. So you always feel that. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. And even though we are not at times nominated, we still compete every year. But even if I'm not nominated, I still visit those events. Those events. It's like religious pilgrimage. कि आप जाते हो, आप फिर से वो देखते हो और उसी में आप बढ़ते हो. So आपके डिजाइन फर्टर्निटी के लिए वो एक तरीके से तीर्थ स्थान है. हाँ बिल्कुल, वहाँ एग्जैक्टली. आप बहुत सारे भगवानों से मिलते हो जिनका अपना अलग अलग आशीर्वाद आपको मिलता है. बिल्कुल. सच में है ना. There are gods out there. Obviously. You know, if you see Renzo Piano, So what हम do you एक say? कुएं के मेंढक नहीं बनते हैं. बिल्कुल, हम बाहर बिल्कुल, निकलते हैं, हम चीजें देखते हैं. You have a different perspective to You look at things. strive for something, you learn automatically. Exactly. That And is then you what- come out with certain very beautiful ideas, and it's not like you copy them. You get inspired. Inspired. Exactly. You cannot copy anything because their whole workspace is different. Yes. Their scope of work is different. The way they work is different. We work is different. But The process is same, but your angle of handling is different. बिल्कुल. That's So I always talk in one word is algorithm. You know, algorithm is what? It takes so many parameters together हाँ. and comes out with the right output. Absolutely. तो algorithmic होता है. तो वो algorithm में अगर आपने डेटा डाला कि वो इंडिया है हाँ. और इंडिया में गुजरात है, उसके अंदर बड़ौदा है या इंदौर है, तो वो algorithm में आउटपुट चेंज हो जाएगा. There Yes. cannot be two same designs. Two same designs. You know, I cannot build a school in Baroda and I can build a school in Indore with the same architecture. Not possible. Not possible. Because the site is different, the context is different. The project will be obviously different. Different. Your experience is 18 years plus, right? Yeah, in the way
as far as the office is concerned, we started somewhere in 2005, so 20 years now. Okay. You started your career at Karan Grover and Associate and worked on India's first LEED Platinum rated green building. Yes. How did that experience shape your design philosophy? Yeah, so actually that was the first exposure when coming to the field and talking about sustainability, understanding sustainability, what are the norms and what are the kind of practices, and it was quite intense, like the LEED Platinum rating and all that kind of systems to understand, and then to look into minutely into all the use of materials, use of technology, use of light, use of ventilation. So all those 100 parameters started revolving in the mind because the exposure of that project. Okay. And today it has evolved to such a level that it comes automatic. Right. That's the way it So, goes. green building means talks about more of sustainability also. Exactly. So we it is like that different phases of rating a green building, like during the course of construction. How are you disturbing the site? How far you are keeping the site intact, and using the minimal resources. Can you give us an example? Like, I would like my audience to know about it. See, there's one parameter is that if you are using certain building material, then what is the lead of that material? Suppose कि आपका कोई मटेरियल आपकी साइट पे कंस्ट्रक्शन के लिए आ रहा है, तो उसका लीड 5 किलोमीटर है कि 50 किलोमीटर है कि 500 किलोमीटर है. Okay. So the energy embedded within the material is not only the material. Not only. It is also the transport. It is also various parameters by which you pile the energy on the each material. Each material. So that is where it is at the raw stage. Okay. कि आप जब भी कोई मटेरियल पिक कर रहे हो तो मटेरियल का एम्बेडेड वैल्यू क्या है. कि आज आप न्यूजीलैंड से आपके सेब आ रहे हैं तो वो सेब के ऊपर कितनी एनर्जी लग रही है. राइट. इट इज कितना फ्यूल लग रहा है, हाँ, समझा? कितनी दूर से आ रहा है, कितना समय लग रहा है. Exactly. So we have to go to this detail. That's why then the count. So everything is counted, calculated, and then it is rated. Okay. That's all. Okay. What's one thing you would advise our young architects and interior designers to focus on so that they can truly win their clients' trust and satisfaction? Because I have always listened to you about giving satisfaction to the client, whether it is a residential project, whether it is a excess project to XXXL project. Bilkul. So I will always say, see, there is a little bit of kind of different understanding in this field, particularly in architecture and design. But we are, as our profession is same as all other professionals. So I would like to call us as doctors. As doctors? Yes. Okay. And we need to first, before entering or thinking about practice, we should train ourselves the best. सही बात है. Right? Very true. So every individual in this creative field must allow themselves a good time and work with very nice fraternity, very nice good professionals, and doing ethical practice, and then start engaging themselves with their own creatives. जब आपके पास बेस अच्छा होगा, फाउंडेशन अच्छा होगा, तो client satisfaction Automatically. automatic है. So I trained myself for 7 years, and that was the best part of me. कि भाई now I was now good to go, start experimenting slowly, and then start building larger and larger and larger projects. So you're trying to say that after completing your architecture or interior designing, you need to spend at least 5 years under a good practitionist who has done, under somebody who is really good in their practice. 5 साल का gestation to learn from them and then start your own practice? I would say that is minimum. Minimum. Yeah. If you see in the world, आप दुनिया में US में जाओ, कोई भी प्रोफेशनल 40 के पहले स्टार्ट नहीं करता. नहीं करता. सही बात है. डॉक्टर्स इसलिए आपने बोला, पढ़ते ही वो लोग पढ़ते ही जाते हैं, बाद में फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करेंगे. सही बात. उसके बाद सेमी प्राइवेट में जाएंगे. Yes. उसके बाद प्राइवेट में जाएंगे. जब उसने 500 ऑपरेशन का अलग अलग स्टेज देखा है, एक बार उसने सिर्फ कैंची पकड़ी है,
सही बात है। और जब लास्ट में और बीच में कुछ छोटा काम किया, फिर उसके और बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, तब जाके वो कोई अच्छा बड़ा ऑपरेशन कर सकता है। Are your children also coming in the same industry? Fortunately, yes. My elder daughter has already joined the CEPT University and she's in second year. Wonderful. Wonderful. So, abhi, let's see how it goes. Okay. You represented India on a global platform. हाँ. Even given presentation at Czech Republic. Yeah. As an architect who has achieved this more than once, do you feel these milestones are the result of manifestation? Or it is sheer determination and design brilliance carrying you there? आजकल बहुत चल रहा है सर मैनिफेस्टेशन इफ यू वुड हैव हर्ड अबाउट इट। Yes. तो आपने ग्लोबली अपने आप को रिप्रेजेंट किया है एंड आई थिंक बहुत कम लोगों को ऐसे चांस मिल पाता है, बाय गॉड ग्रेस आपको मिला है। तो डिड यू एवर मैनिफेस्टेड अबाउट इट? जैसे शाहरुख खान बोलता है कि कोई चीज़ अगर आप शिद्दत से मांगो तो पूरी कायनात आपको उसको जोड़ने के लिए, तो आपने भी कभी ऐसा किया कि कांच के सामने खड़े होके कि आज मैं यहाँ चेक रिपब्लिक में पराग में प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ, ऐसा हुआ क्या आपके साथ? See, actually, there is a way to look at it. You are right at your own ways. See, any given time, whenever I was working in any offices, I had some exposure with international people. So sometimes we had some trainees from Japan in the offices. Okay. And larger offices, there were more people and more bigger fraternity. But from that time itself, I had an inclination Okay. to work on an international language. अच्छा. कि भाई मैं इसी एरिया में क्यों काम करूँ? You know, I should be able to work everywhere. So that universal language has to be developed. तो जब आप ऐसा काम करते जाओगे तो काम ही बुलाएगा. Why do we need to worry? Some people will be inspired by seeing your work, because work only speaks. Any words do not matter in this field. Because आप कितना भी बोलोगे, लेकिन आप जो बनेगा वो तो सब देखेगा ही. सही बात है. जहाँ पे शब्द की कोई ज़रूरत नहीं है. तो those experiences, you pass it to people, and then those people get inspired that, and then they actually they would call you. Yeah. So I never approached anyone for any of these. But did you manifest it? Not yet, I'll say. Not yet. Oh God. फिर आप manifest करोगे तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाओगे. वो automatic है, because I did not ever needed to do this. Absolutely. हाँ. तो जैसे आपके साथ भी बैठा हूँ तो it is something which is eventually happening. आप खुदा के बंदे हो. अरे. And let us talk about your Aero Village project. हाँ. Okay. You mentioned that your children will also be a part of it. Obviously. And you called it a face of new India. Exactly. What makes this project so special and futuristic? So we were very lucky to get introduced to such a client who has such a nice vision, and we were to build on it. So Aero Village is something which everybody would have dreamt from the childhood times, कि मेरे घर के सामने मेरा प्लेन खड़ा होगा. जैसे कार खड़ी होगी. जैसे कार खड़ी होगी. I saw your presentation. It was amazing. तो आज सोचो कि आज वो possible है. So you know what happens that during the course of time, even the society's manifestations work. Yes. कि भाई सब जो सपना देखते हो धीरे धीरे नेक्स्ट जनरेशन उसको अचीव करने के लिए दौड़ता है. तो we were lucky to do this project, and it's a very huge project. 1100 acres is big land to sketch on, to work 1100 acres. हाँ बिल्कुल. और मैंने ये भी सुना है शायद आप अभी भी फ्लाइट से ही जाते हो साइट पे. So mostly the site visits are direct. We land directly on the site. Amazing. So when are you is it going to get rolled soon, or it is already? No, it is already in the market, and we already have the airstrip on the site, and with the licenses, registration. So even an Airbus A320 can land in emergency. Achha. So that is the size of the airstrip, and we have the villas coming up along the airstrip now. So the first villas will be in the phase of 350 acres. 350. So that is already in process. Very nice, sir. सर एरो विलेज से लेकर आपने रिहैबिलिटेशन सेंटर तक बनाया है, विच इज अ बिग टैबू इन द मार्केट. कि रिहैबिलिटेशन सेंटर कौन बनाता है. जब वो चैलेंज आपके पास आया तो आपने एक बार उसको रिफ्रेन करने की कोशिश करी कि एक्सेप्ट किया कि लेट मी टेक दिस चैलेंज आल्सो.
See, as a professional and as part of a society, our role is more larger than just doing buildings which are kind of for domestic market. हाँ The buildings which can improve हाँ the society in many ways are also part of our responsibility. So we had this client from USA, and he wanted to build a healing center in India, and we do have those ailments like the drugs and the whites powders and chemicals Absolutely. and all those kind of dependencies. Alcohol is very common of them. common of them. So why not we try something so that it will help the society in a better way. तो इसी तरह से हमने ये प्रोजेक्ट को एंगेज किया और हमने उसमें नए तरह से काम किया कि हमको वो करेक्शन फैसिलिटी नहीं बनाना है, हमको एक ऐसी चीज़ बनानी है कि पीपल गेट इंस्पायर्ड दैट लाइफ इज सो ब्यूटीफुल. आई वॉज एट अ रॉन्ग प्लेस. True. That will inspire him to get out of this. That was your thought process. Exactly. And To that's, make that. Exactly. तो हमने इसीलिए वो रिजॉर्ट काइंड बनाया. It's so beautiful that you feel that life is so beautiful. I was in a bad place. It is working right now. People are there. It is most successful rehabilitation of Asia. Where is it situated? It is near Baroda. It Near is Baroda. It is next to Pavagadh. Pavagadh. Yeah, 55 kilometers, 55 What is the name of that? It is Alpha Healing Center. Alpha Healing Center. Yeah. So today a lot of patients come from USA, Acha. UAE, lot of places. We get and a very good, nice reviews Okay. and an amazing treatment because this is US standard. Yes. So they have a very good, patented practices Okay. of drug detox and that kind of Amazing. Sir, of course, travel opens up the mind, but what inspired you to travel more than 100 countries? वो भी 80% solo. आपकी wife, I'm sorry to say, but 100 से ज़्यादा countries घूमना, वो भी solo travel करना, being a married person and being an architect who's always on the toes. Yeah, exactly. How did you manage to do? Like, क्या? कैसे? See, actually ये तो सच में बताओ आर्किटेक्चर के साथ एम्बेड हो गया था. So before coming into architecture, one line from one of my guru, I would say guru, Mr. N.S. Pingade. N.S. Pingade. Pingade in Baroda. He was an artist. Achha. And he was the first basic design teacher in MS University. Okay. And he was my mentor. I went to his kind of studio where you start preparing for the exams for architecture. Okay. So he was in his 80s at that time. Right. And somehow the other way we had a nice connect. Okay. तो मुझे हमेशा वो कभी भी टॉगल करते थे कि पटेल क्या कर रहा है इस संडे. कुछ नहीं सर. तो कहीं जाना, कहाँ बैठा रहता है, दैट काइंड ऑफ थिंग. क्यों सर, यू गो, यू ट्रैवल. सर 50 रुपये है तो पावागढ़ जा, 50 रुपये पावागढ़ जा सकते हैं. You go to Pavagadh and give me 100 sketches on Monday. Oh. So that kind of, first He initiated that. He बिल्कुल. pushed you हाँ. to travel. कि तुम घूमो, यहाँ बैठने क्या मिलेगा. तो तब से when I finished the college, I had seen almost all of India. Fantastic. सिर्फ नॉर्थ ईस्ट रह गया था. बाकी I would take a big circular route and 20 days of vacation. लास्ट एग्जामिनेशन के उसी रात चले जाने का और जब वेकेशन खत्म होता है तभी वापस आने का. अच्छा. And then you keep on traveling solo, backpacking, minimalist way, and you explore. Of course, you traveled more than 100 countries. Photography, I have seen your photography. It is fantastic, whether it is a monument or an animal photography. But it's clearly your passion. What made you again incline towards photography? See, actually, photography is a parallel art. So we are artists. Yes. We do art in architecture, right? So you must, I would always suggest that you must have something in parallel. Parallel. So that it engages you more. It gives you that small breathing time in between, but still your creative edge keeps on shining. Right. You keep on doing that. So what happens that जैसे कि हम अपना काम तो करते हैं, एक टाइम के बाद सैचुरेशन आ जाता है. True.
So you need some breaks which are which are creative ones. Right. So this photography gives me that, change of work is rest. I do work as a photography, but it's my rest. There's no compulsion. I think that is your recreation. हाँ बिल्कुल. और ट्रैवल करते हैं, जगह देखते हैं, एंड देन ट्रैवल इज समथिंग वेयर यू सबकॉन्शियसली गैदर लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन. Absolutely. तो जो वो इन्फॉर्मेशन होता है वो आपको पता नहीं कि आपने ले लिया, आपने कुछ देख लिया, वो उस टाइम पे रिकॉर्ड हो गया. आपने वो स्केल, प्रपोर्शंस, मटेरियलिटी सब कुछ आपके अंदर आ गया. पब्लिक पीपल, आई लाइक टू ट्रैवल विद पीपल. आई लाइक टू बी विद देम. सो आई ट्रैवल इन बसेज, लोकल ट्रांसपोर्ट, मिनिमलिस्ट वे आई ट्रैवल सो दैट आई कैन कनेक्ट टू लॉट ऑफ पीपल. तो आप कल्चर्स चेंज होते देखेंगे, हर 100 किलोमीटर में कुछ बदल जाता है. तो वो जो ट्रांजिशन होता है, तो जब आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आपके पास वो डेटा ऑटोमेटिक है. यू डोंट नीड टू सर्च फॉर इट नाउ. क्या आपको ऐसी जगह पे कि माउंटेन्स में काम आया है जैसे ITC मेमेंटो से, तो आपके पास वो लाइब्रेरी है कि भाई ऐसे में क्या काम हो सकता है, वो ऑटोमेटिक है. Automatic है. तो दोज थिंग्स एक्चुअली गिव यू अ गुड हेड स्टार्ट Head start. टू एनी प्रोजेक्ट. सही है. You are not going to fail because you already have a lot of library where you've seen a lot of things in. So that's a visual library. Exactly. And the camera, the lens itself gives you that focus Exactly. towards that particular picture, which shows you so many integrate things, बिल्कुल. which register in your mind. मतलब ऐसा है सर कि आपका माइंड आप ही का है, आपको कोई कॉपी नहीं कर सकता. You can say that in Of your words. course, yeah. I mean, you've been so creative and मैंने एक चीज़ नोटिस और देखी है, मैं बहुत डिज़ाइनर्स और आर्किटेक्ट से मिलती हूँ, मेरा प्रोफेशन ऐसा है, और पॉडकास्ट ने मुझे उनको बहुत क्लोजली स्टडी करने का मौका दिया है. I've seen that designers and architects have some artistic, of course, Inclination. whether they are a good musician, they play very Exactly, good guitar, exactly. they sing, बिल्कुल. or they paint beautifully, Exactly, yeah. they do a lot of photography, they travel a lot. So I think this is a part of your journey. Exactly. As a profession. You need to, for example, as you mentioned, architects are like a doctor. Doctor has to study a lot. Exactly. On and off, they have to study case studies. बिल्कुल. Whether They have to do the workshops, doctor they have is to do, established Yes. practitioner doctor, still he is They have attending to lot go of conferences. lot of trainings. Lot of trainings. Yes. Lot of new medicines. Similarly, in your career, in your profession also, these are part of your, upbringing बोलने या अपन क्या बोल सकते हैं? Evolution. You have to evolve. You have to keep on evolving. Absolutely right. Absolutely तो right. तभी आप यंग रहोगे, तभी आप you will be able to cater everyone. Because again, process is same, Hmm. but how to make that process different is in your hand. And बहुत सारी चीजें आपके आजू बाजू बदलती है. Yeah. There are certain things where all this geopolitics also come into picture when it Yeah. come into big architecture, Yeah. right? Yeah. Every architecture monument हाँ. has been made to exemplify something. Okay. जैसे आज कोई सबसे tallest tower बना रहा है, हाँ. तो they are exemplifying power. Power. They reflect that कि हम इतने powerful हैं. So anything which is built has some kind of message. तो वो सब चीज़ें भी आपको करंट रहना है, कहाँ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, तो उसकी वजह से भी आपके आर्किटेक्चर में इन्फ्लुएंसेस आएंगे. आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज में इन्फ्लुएंसेस आएंगे. आपको कहाँ पता चलेगा कि यहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है, बिकॉज एट टाइम्स सम मार्केट्स गो स्टेराइल, गो डोमेंट, स्लो, बट देयर आर अदर मार्केट्स व्हिच आर ऑन. Then you will be always active. Active. That's a very valid point. AAA emphasizes value-driven design and sustainability. How do you balance traditional practice with modern cutting-edge design thinking? How do you do that? See, actually, it's a very a simple way to say is that we inherit everything. So heritage is part of evolution. जो हमने कल किया, आज हम उसको और बेटर करेंगे, और कल इससे बेटर करेंगे. तो obviously we have, whenever we work, we are rooted, right, and we have to be rooted to the place. So the architecture is about time and place. तो कौन से टाइम पे और कौन सी जगह पे. आज फिर से कोई ताजमहल नहीं बनाएगा. नहीं बनाएगा. वो एक टाइम था और वो एक जगह थी.
तो हर एक बार जब आप कोई भी काम करते हो तो इट इज़ ऑलवेज टाइम एंड प्लेस. आज कई बार हम क्या करते हैं कि वी वर्क फॉर डिफरेंट डेवलपर्स और एक बढ़िया प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया, everything is good, and suddenly certain problems come and the project is stalled for a couple of years. Can you imagine that developer is not ready to build that project now after 2 years? Time has changed. Time has changed. Place has remained constant. Time has changed. I still remember in one of your project there were 21 swimming pool which you spoke about. That time you made it with some other thing. Yeah, exactly. And now it is something Time different. has changed. Time has changed. Absolutely. Sir, आजकल collaboration का ज़माना है and collaboration seems central to your work. Exactly. You partner with engineers, you partner with artists, you partner with associate architect designers, globally in fact, global consultant also. What role does collaboration plays in creative process? I mean, I also want to know that collaborations कई बार insecurities भी लाता है. आपको क्या, आपने तो बहुत collaborations किए across world. So एक आप अपना viewpoint बताइए collaborations पे. See, actually, if you see all these mega projects which we admire, कि भी इतना बड़ा एयरपोर्ट बना दिया सिंगापुर में, हमने बनाया, राइट? क्या एक बंदा कर सकता है? बिल्कुल नहीं. Can you imagine the Mumbai airport just drawn by a single architect? Not possible. It is a part of a large collaboration. So जो मेरे पास विजन है वो मुझे डालना है, जो कोई दूसरा स्पेशलिस्ट किसी चीज़ में है उसका विजन मुझे कैरी करना है, एंड सबका कलेक्टिव होगा तब जाके कोई बड़ा काम हो पाएगा. It is not possible for one person. Even the biggest architects, they design concepts. जैसे किशोर कुरोकावा डिज़ाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ द थाईलैंड एयरपोर्ट. उसके बाद इट इज़ गिवन टू डिफरेंट आर्किटेक्चर टीम हु डिटेल्स इट आउट. ऑलराइट. सो ऐसा नहीं होता है कि एक आर्किटेक्ट हर एक चीज़ करेगा, वो विजन बनाएगा, ऐसा होना चाहिए, फिर वो कंटिन्यूसली उसको ट्रैक करता है. So that kind of processes go on in the world. So I am little bit better exposed to the things that happen around, beyond India, and that's why I'm open to collaborations. I'm open to ideas. I'm open to people who can, do value addition in our work. Right. So इस तरह से we grow. Okay. Could you share the story behind one of your landmark project, like the Alpha Healing Center or the Earth House? Both have the stories by themselves, but and both the projects are unique by their own ways. Talking about Alpha, it is something which is creative, but it is doing a big social service. So it is affecting a lot of lives. Right. And I'm so happy that so many people are getting treated over there, and so many people's lives are being bettered. If you talk about the Earth House, it is talking to sustainable architecture, creating an example whereby tomorrow people will be inspired to build in such kind of materiality, which is very sustainable, which is very grounded, and which connects to our roots. हमारे पहले मिट्टी के ही तो घर होते थे 100 साल पहले. सही बात है. हम 100 साल में सब भूल गए, right? And now we have reinvented the technology in such a way, and it is not, we have just shaped it because this was there. Yes. Hunarshala from Bhuj, they are doing excellent work on this. And what happens is that we made it in such a way that now the people of new generation would like to opt for it. So we will be more sustainable and more grounded. क्योंकि आप अर्थ से जब कनेक्टेड होते हो आपका पूरा एक्सपीरियंस चेंज होता है. सही बात है. You are currently working on a lion sanctuary resort in Gir and luxury resorts in Ayodhya and other places also. How different it is designing for hospitality compared to residential to corporate spaces? So again, I'll come back to those things as if we cater to various segments of the market. तो हर एक सेगमेंट का नीड अलग अलग है. कोई घर बनाता है तो वो एक अलग सेगमेंट है. हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट इज अबाउट प्लेजर, इज अबाउट kind of being in that place, experience, yeah, creating those experiences and still being in the limits, because it is a project. It is based on revenue, it is based on ROI. Yes. So there are so many factors governing different projects. So it is quite natural now that all these algorithms come naturally, and
ऑटोमेटिकली वो अंदर चीज़ें रख दिया जाता है कि ऐसा होना चाहिए. बट द आइडिया इज़ दैट every project has a different aspect, and addressing those aspects and coming out with a nice solution, वो थ्रिलिंग होता है. राइट. कि हर क्लाइंट बोलता है यार मेरे को मजा आ गया, यहाँ पे यही होना चाहिए. हाँ. यू नो, और कई बार ऐसा होता है कि यू नो सम अदर क्लाइंट से कि यार किसी, यानी यस्टरडे ओनली वी वर इन द मीटिंग एंड समबडी सेड कि मुझे उनका क्लाइंट, वो आके क्लाइंट बोलता है कि हम अपने यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं बना सकते हैं. अच्छा. सो पीपल आर बीइंग इंस्पायर्ड. सो यू वोंट इवन इमेजिन, हमने आपकी रील बनाई थी व्हेन यू वर कमिंग फ्रॉम फॉर ट्रिपल आईडी एज अ keynote speaker. We have put a lot of your work in that particular reel of 1 minute. There were people who asked me, यार हम ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं, ये कौन आर्किटेक्ट है, हमको बताइए जरा. We would like to work with him. मैं कहा अच्छा, अभी मैं ही नहीं मिली उनसे, अभी let him come first and let's first understand. बिल्कुल. What have been some of the biggest challenges you faced in your 18+ year journey of architectural and फाउंडर बेसिकली? आपको सबसे बिगेस्ट चैलेंज आपकी इंडस्ट्री में क्या लगता है? As of now, you know, our industry is still evolving. Yeah, as far as the design. In India, you're talking in India, about? yeah, because still we lack professionalism. Okay. In a big way. Okay. And it is not only one-sided; it's bi-directional, two-way. क्योंकि our in the field. As an architect, what I've seen in the world, the architect's scope is very defined. But India में वो नहीं है. India में even client expect कि architect सब करेगा. हाँ. Material management भी करेगा. Project site management management भी करेगा. सब कुछ करेगा. बाद में site clean up करवा के मुझे हाथ में देगा. सही बात. So if you see the scope of architect role in India is so blurred. Yeah. कि हमको बहुत सारी चीज़ें अननेसेसरी करनी पड़ती है. और वो सब चीज़ें बहुत सारा रिफाइनमेंट ज़रूरी है हमारे फील्ड में, कि भाई एक डेफिनेशन, देन अ स्टैंडर्डाइजेशन, कि भाई आप कहीं पे भी आप बाहर जाते हो तो देयर इज अ स्टैंडर्ड. इफ़ आई गो टू जापान, आप कोई बंगलो बना रहे हो तो 18% से 16 भी नहीं करेगा, 17 भी नहीं करेगा. ओके. वो आर्किटेक्ट का कोई भी लेवल हो. अच्छा. वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है. बट अपने यहाँ पे वो बहुत सारे अलग अलग set of ways है we do. तो बट वो क्या होता है कि वो प्रोसेस से बाहर निकलते हैं, और वो प्रोसेस से बाहर निकलते हैं वो जस्टिफाई भी कर सकते हैं. तो देयर प्राइसेस आर आल्सो वेरी डिफाइंड एंड दे डू इट अ वेरी नाइस वे. तो ऐसी चीज़ें हमारे अभी होगी तो इट वुड बी मच बेटर. और बट इट विल इवॉल्व, इट विल टेक इट्स ओन टाइम. सो यू हैव डन मल्टीपल डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स and you have multiple different clients also, whether they are Indian clients or they are international clients. Yes. How do you deal with creativity clashes between client expectations and your vision? See, actually again I'll root down to not architecture, but it is psychology. So to be a good architect, you need to be a psychologist. अच्छा. हाँ. इससे मुझे एक चीज़ समझ में आती है, या मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आर्किटेक्चर के कोर्स में साइकोलॉजी सब्जेक्ट है कि नहीं? मुझे याद नहीं है, लेकिन नहीं है. नहीं है ना? होना चाहिए. होना चाहिए. It should be. Because what happens कि now if you are having such a large area of work, now we have some clients in Africa, we have some clients in USA, some clients in Australia, and everybody has a different way of thinking, way of working. वहाँ का कल्चर भी अलग है. तो सबसे पहले आपको बहुत जल्दी गेज करना पड़ता है कि भाई इनको क्या चाहिए, which direction to lead to. हिंदी में बात करे जाए तो भापना पड़ता है कि वो व्यक्ति क्या चाह रहा है. And the language does not matter. You can even learn by expressions. Right. So those are the things which you need to gauge in a very short time. But उसके लिए वो travel algorithm, all these things experience comes into picture. बहुत matter करता है. And वो क्या है कि कई बार trial and error से भी होता है. Earlier when we started, we used to try a lot and we used to experiment a lot. But now slowly that phase is over. And we now get on to the business immediately. Absolutely. तो हमारा जो turnaround होता है वो भी fast होता है. So creativity clashes को रोका जा सकता है psychologically अंडरस्टैंडिंग करने से. बिल्कुल. बिकॉज आप जो समझाना चाहते हैं आपके क्लाइंट को कि मुझे ऐसा करना है,
वो तभी क्लैश में आएगा जब आप उसको नहीं समझा पाओगे। एग्जैक्टली और उसमें पहले क्या है, पहले तो आपको समझना है. एग्जैक्टली। सी क्लाइंट इज अ गाय हु इज ड्रीम्ड समथिंग. आपके पास ड्रीमर्स आते हैं. राइट. मुझे घर बनाना है, मुझे Yes. ऑफिस बनानी है, मुझे रिजॉर्ट बनाना है. ट्रू. वो उसकी ड्रीम है. यस. आपका काम है उसको ट्रांसलेट करना इन द रियल वर्ल्ड. यस. तो आपको तो सबसे पहले वो समझना है कि उनको क्या चाहिए. उनको क्या चाहिए. अगर वो एड्रेस नहीं हुआ तो ये प्रोजेक्ट एनीवे फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप फेलियर है. देयर इज नो ईगो विथ मी कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे उनकी ड्रीम रियलाइज करवानी है. सो आई हैव टू वर्क फॉर देयर ड्रीम्स Their dreams. टू बी रियलाइज्ड. Yes. So that's where you have to get yourself into their mind and think from their eyes, look from their eyes, think from their mind. तब जाके आप वो imagine कर पाओगे कि इनको क्या चाहिए. And probably you will, in a couple of kind of rounds of discussions and that kind, you will be able to define a path Path. for the project. Last question I would like to understand. In this 2025, मतलब 2000, when did you started your career or somewhere? 2005. 2005 to 2025. हाँ Technology would have played a tremendous बिल्कुल. role in your industry. बिल्कुल. How important is to be updated and upgraded? That is the key factor, probably why we are doing better. That's From the the key very, factor. very first day. Can you imagine when did you see a digital camera first in your life? Probably 20 years back, 15 years back, 15 years back. 15 years back. तो 15 साल पहले यानी ये 2010-11. आराम से. You would have seen those digital camera Small- slim ones ऐसा, yes, बराबर है. yes. I had it in 1997. Oh, बराबर है. तो मेरे पास डिजिटल कैमरा थर्ड ईयर आर्किटेक्चर से था. अच्छा. Right? So what happens that always an eye towards the next. What's new? तो हमको अगर इंडस्ट्री में या हमको कहीं पे भी आगे रहना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी विद द The करंट technology. एंड यू हैव टू एंटिसिपेट थिंग्स बिफोर हैंड. तो कई बार तभी आप वो रेस में रह पाओगे. One more thing, technology has both its faces, pros and cons. Yeah. As a layman who are not connected to a designing field, like your client, who want to make but is not that apt. But this Pinterest, you talk about Insta Reels, they influence them a lot. Yeah, it is, yeah. So, do you feel that this kind of things are really hampering the creativity which you people want to show in the project? Again, as I said, there are two ways of looking at it. Yeah. First of all, there are good tools where you can have more imaginative ideas and a basket of things which you would look for. But on the other side, because of these flashes, I would say flashes, and impulsive likings, Yeah. the clients' visions are distorted. When they come to us, they have a certain vision what they want to get from us. But on the course of time, because of these influences, I can see that there are a lot of distractions. Okay. कि आज ये दिख गया तो आज मुझे ये भी चाहिए. तुरंत ही रील मुझे भेज देंगे Right. कि धर्म भाई अपने बाथरूम में ऐसा हो तो कैसा होगा. बराबर है. एंड वी हैव ऑलरेडी इमेजिन्ड द बाथरूम मे बी अ ईयर बैक Yeah. व्हेन वी हैड कपल ऑफ फर्स्ट मीटिंग्स Right. कि भाई इनके लिए जो ये सोच है और इनका जो स्टाइल ऑफ लिविंग है या इनके लिए क्या बेस्ट एप्ट है. Yes. We have already, algorithmically Imagined come to and- concluded it. And suddenly there are this kind of distractions for us also. And then again to regroup and again to redirect them कि भाई हमारे लिए ये बेस्ट है तो वो एफर्ट बहुत ज़्यादा लग जाता है. ज़्यादा लग जाता है. कई बार वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज एंड सेटल विद द सिचुएशन कि भाई चलो ऐसा कर देंगे. वो भी कई बार करना पड़ता है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे क्लाइंट सेटिस्फैक्शन इज वर्थ लॉट. ट्रू. बट मुझे लगता है सर ये सारी चीज़ों को चेंजेस अमेंडमेंट्स करने से एनर्जी और बहुत मॉनेटरी losses बेनिफिट, मॉनेटरी Losses, इश्यूज, हाँ. दोनों चीज़ों का प्रॉब्लम होता है. बहुत होता है. एंड प्रोजेक्ट्स गेट डिलेड अ लॉट. Delayed a lot. बिल्कुल. बिकॉज आज हमने जो मटेरियल्स पैलेट सिलेक्ट किया है वो कल चेंज हो जाता है. So do you feel that you must educate your client before picking up the project? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. It is a very difficult. बिकॉज एवरीबडी इज एस्पायरिंग. उनका भी ड्रीम है. उनको Dream. चाहिए कि एक ही बार चीज़ बनने वाली है.
तो वो सब चीज़ों की वजह से वो थोड़ा इमोशनली फ्लो कर जाते हैं एंड देन वी हैव टू टैकल इट इन अ नाइस वे. That is why psychology is comes into बिल्कुल picture. बिल्कुल. So now your role of psychologist after Pinterest is much more higher. Much more higher. Looking ahead, what's your dream project that still you want to bring to life? Last question. What is the dream project which you still want कि हाँ मुझे ये करना है? Actually, to me now, we should start something which is called a reverse process. Reverse process. Yeah, it is like reversing the things. Like, why can't be 100% sustainable? As a human being, So sustainable word हाँ, in India really occurs? है? बहुत pseudo तरह से it has pseudo effects. Like it is not in the direct way, but certainly we have to find a solution whereby we live on this planet on a very light footprint. क्योंकि अभी हमारी फुटप्रिंट इतनी बड़ी हो गई है, सो इट इज़ सपोज टू डू अ लार्जर डैमेज ऑन अ लॉन्गर रन. और अभी बहुत ज़्यादा टाइम है भी नहीं, व्हाट आई एंटिसिपेट. सो आई वुड लाइक टू डू समथिंग विच ऑफ दैट काइंड विच आई कैन से, और anybody who sees the project can say that this is net zero or this is really sustainable development. And it lasts long because service life भी बड़ी होनी चाहिए. सर जैसे लीड की बात करी हमने, सस्टेनेबिलिटी की बात हम हर डिज़ाइनर से एक बार तो ज़रूर करते हैं, बराबर है. समझते भी हैं कि उनका व्यू पॉइंट क्या क्या है. है, हाँ. उसमें से एक डिज़ाइनर ने हमको बहुत अच्छी बात बताई कि सस्टेनेबल इज़ अ लाइफस्टाइल. सस्टेनेबिलिटी इज़ अ लाइफस्टाइल. अगर क्लाइंट सस्टेनेबिलिटी लाइफस्टाइल को एक्सेप्ट करता है तो एक आर्किटेक्ट और डिज़ाइनर उसको सस्टेनेबल प्रोजेक्ट बना के दे सकता है. बराबर. It is a backward integration, as you said, that we have to get reversed to what we were before. So, we all talk about sustainability, but actual sustainability word or the practice of sustainability is still not seen in many of the... Yeah. It is a distorted vision, I would say. Still. Lot of distortion is there. Lot of blur ideas are in the market. And we are also seeking solutions. ऐसा नहीं है कि भाई किसी ने भी वो कोड क्रैक किया है. हाँ. But the idea is कि at least the thought process. It should start. It start. So what happened that when we did this first Earth House, where we wanted to have a lightest footprint, and we could manage it in the best way. I cannot say कि वो 100% sustainable है. Yes. But the idea is कि we could still manage it with the lightest. कि वहीं से हमने मिट्टी ली, वहीं फील्ड में से ही हमने सब 80% मटेरियल प्रोक्योर किया. From very nearby we sorted all the construction materials. So those are the first ideas where we started this thing. Now that seed has now started developing. The next person came, we showed them that idea, and he built a huge big house with that technology. Okay. So first one was a prototype of 3,000 square feet. Now we have done a 12 to 13,000 square feet footprint. Oh, no. Right? And that is the inspiration. Now this is even better. Better. Than that. So I am saying कि इसका जब next version होगा, तो even gold is 99.99, even after refinement of technology of that level, कि आपको कोई 100% gold आज भी नहीं दे सकता है. So I would say sustainability, when you do it to construction industry, you would pitch for 99, something like that. Okay. So वो हमारा goal हो सकता है. 100%, we are not gods. We are not. Only God has designed a system which is 100% sustainable. Sustainable. जो भी इस दुनिया में आता है, कोई भी मार्क छोड़े बिना चला जाता है. सही बात है, सही बात है. And we leave such a big footprint, such a big things, right? So we are putting much load on this planet. So thank you so much for being here. You are very humble, yet you have done tremendous work in your career. Seeing you, it seems that a person need to be always grounded. Then only the work can be in acres. And you can stand in front of an international market and give the presentation. I must say that it really inspires seeing people like you to be in this industry and work so creatively and work so hard also. So thank you so much for being. And one thing you would like to give message to our listeners and viewers, please. See, actually,
to the fraternity, I would say we are into service industry. We have to serve people. Yes. So obviously we have to be humble enough to get into that zone where we can, you know, respectfully serve people. True. And the mass. Yeah. So कई बार हम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं, but I say to the developer that you are not my client. The client is the one who is going to stay in this apartment. Yes. तो हमारा जस्टिफिकेशन उस लेवल तक होना चाहिए कि वो यूज़र को क्या मज़ा आएगा, भले वो बेचारा छोटा सा अपार्टमेंट ले रहा है, बट उसकी सबसे बड़ी ड्रीम है. He has paid out of his nose to you know do this project. तो कई बार वो जस्टिफिकेशंस आप जब उस लेवल पे जाके हम सोचेंगे तभी हम उसको एंटिसिपेट कर पाएंगे. Right. सो बीइंग हम्बल इज़ नेचुरल, Yeah. राइट. एंड मैं हमेशा बोलता हूँ सबको कि कितना भी पैसा हो जाए, आप ज़मीन से 2 फुट ऊपर चल तो ही सकते हो. सही बात है. Very true. Very true. आप कितने भी बड़े हो जाओ, आपको चलना तो ज़मीन पे जमीन पे ही ही पड़ेगा. इफ़ यू फ्लाई बिजनेस क्लास एंड यू फ्रॉम हियर टू से USA, मैं बोलता हूँ आप सब खा लोगे, सब पी लोगे, सब एंजॉय कर लोगे. 8वें घंटे में बोलोगे कब मुझे उतारोगे. कब मुझे उतारो. सही बात है. थैंक यू सो मच सर.